Good morning, students. Today we will start a new chapter called trigonometry. So first we will understand what is the meaning of the trigonometry. पहले हम समझेंगे trigonometry का मतलब होता क्या है. Okay, so trigonometry एक word है that is a combination of three. What we can divide that word into three parts: tri, gono, and metry. Tri means of the three. Gono is coming from a word called gona, जिसका मतलब होता है side. And metry means measurement. So three side close figure is known as triangles, and the measurement of triangle is called trigonometry. Triangles बोल रहा हूँ तो यहाँ पे सब triangle आएंगे, all type of triangle. Okay. So all type of triangle में हम trigonometry को use कर पाएंगे, ठीक है ना. इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ट्रिगोनोमेट्री का वास्ट यूज है. We use the trigonometry in music theory to measure the height of trees, tower, buildings. Okay, in CT scan, ultrasound, हर जगह पे यहाँ पे we use the trigonometry. Let us take one example. Okay, we want to measure the height of the tree. You are here. This is you. Okay, ये हो तुम और यहाँ पे ये ट्री का हाइट मेजर करना है. तुम्हारे पास है मीटर टेप. सो तुम क्या करोगे? तुम तो मैथ नहीं पढ़े हो, तो यू विल व्हाट क्लाइंब ऑफ द ट्री एंड यू विल मेजर फ्रॉम हियर टू हियर. बट व्हेन यू नो अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री, नो नीड ऑफ व्हाट हियर क्लाइंब ऑफ. यहां पे और चढ़ने की कोई जरूरत नहीं. लेट यहां पे सन है तुम्हारा, जिस टाइम तुम्हारे यहां पे सन है तो इसका शैडो आएगा, ये शैडो है इसका. सो यू कैन इजीली मेजर दिस व्हाट शैडो लेंथ. ओके, you can easily measure the shadow length. Let the length of the shadow becomes here what 50 meter. Okay, length of the shadow is let 50 meter. Now the angle of the this top of the tree and this one, okay, here line of sight, this को बोलते हैं line of sight. Okay, तुम जो देख रहे हो इसको, इसका टब को तुम इसको कितना एंगल से देख रहे हो. यहाँ पे तुम जिस टाइम खड़े हो रहे हो, तुम्हारा आंख और इसके बीच कितना एंगल बन रहा है. वो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है इंक्लिनोमीटर. इंक्लिनोमीटर इज a device which is used to measure the angle of elevation और angle of depression. एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है यहाँ पे, ये जो है ये होता है, ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ये व्हाट डिप्रेशन, एंड दिस इज ये एंगल ऑफ एलिवेशन. ये हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो एक इंक्लिनोमीटर जो होता है ये तुम्हारा मेजर करता है ये एंगल को, और भी इसका नाम है टिल्ट मीटर. क्या होता है? टिल्ट मीटर. लेट बाय यूजिंग योर इंक्लिनोमीटर यू मेजर दिस एंगल इज हाउ मच 45 डिग्री. ओके, लेट दिस एंगल इज 45 डिग्री. सो you want to measure the height of the tree. That height of the tree, actual height by this what shadow length, how much? 50 meter. That equal how much? Tan 45, because this is your what perpendicular and this become base. Okay, I will what tell you about this perpendicular and this which one is, but now you what understood. Okay, actual height you want to measure. So actual height by your 50 meter, tan 45 is 1. So actual height becomes your how much? 50 meter. So actual height of the tree is now your how much? 50 meter. This is your what shadow length. Okay, so like this you can what calculate the height of the your trees, tower, buildings by using your simple application of the your this trigonometry. Okay, CT scan, ultrasound. In music theory means music is a one type of sound. Yes or no? Music is a one type of sound. So in your music, sound means your what? Nothing but your what? Waves. Waves means your what? We can find out. So waves are your what? Sine wave and your what? Cosine waves. साइन वेव्स होते हैं और वो साइन वेव्स होते हैं. ओके, साइन वेव कैसा होता है? साइन वेव की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जीरो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस टाइप का वेव फॉर्म करते हैं. ओके, और तुम्हारे कोसाइन वेव जो अगर होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कोसाइन वेव का, तो यहाँ पे क्या होगा? कोसाइन वेव के लिए इस टाइप का वेव तुमको देखने को मिलेगा. इस टाइप का वेव जहां पे तुमको देखने को मिल रहा है दैट इज कोसाइन. ये है जीरो. ओके, स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव. ओके, साइन वेव एंड हियर व्हाट कोसाइन वेव. So this type of wave
So here also we what trigonometry is used. So in music theory to measure the height of the trees, tower, building, CT scan, ultrasound, यहाँ पे तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है। और भी होते हैं ओशिनोग्राफी, समुद्र में लाइट हाउस है, वहाँ पे तुम्हारा कितना दूरी में हो ना हो वो सब मेजर करने के लिए वहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके, नाउ यू कम टू इन ट्रिगोनोमेट्री व्हाट हैपेंस, जनरली वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, नहीं होता तो बनाना पड़ता है। ओके, सो इन दिस हियर व्हाट हियर ABC is a right angle triangle and B is almost here 90 degree, and we know that the here what side opposite to the 90 degree is known as hypotenuse, and this is fixed, and we denote the hypotenuse as here what H. Here AC is the here what hypotenuse, AC is the hypotenuse, and hypotenuse is nothing but the longest side, ये सबसे लंबा वाला साइड होता है, longest side of the right angle triangle, right angle triangle। so ये right angle triangle का सबसे लंबा वाला साइड होता है। लेट अगर मैं एक लूं, एक लेट यहाँ पे तुम्हारा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, 4 लेट 4 3 and 5 और 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ हाइपोटेनस कौन सा है, सो आंख बंद करके जो सबसे मतलब ज्यादा वैल्यू है वो वाला होगा। यहाँ पे 5 इज द व्हाट हाइपोटेनस। बट अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई आस्क यू which one is perpendicular and which one is base, then you will get confused। okay, because that perpendicular and base इसको जानने के लिए we first have to know first the reference angle। okay, so here ABC is a right angle triangle and B is the right angle here। okay, so what is perpendicular? Perpendicular is nothing but side opposite to the reference angle, and base is nothing but the side adjacent to the reference angle। तो reference angle let I take C as a reference angle, मैं C को reference angle लिया। ये reference angle को हम डिनोट करते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जीटा में। ये सब क्या होते हैं, ये सब ग्रीक सिंबल होते हैं, ये सब होते हैं ग्रीक सिंबल। these are your Greek symbol, and by using this Greek symbol we denote the reference angle। what is the reference angle? with refer to that angle we have to what denote that which one is perpendicular and which one is base। ये एंगल को लेके मेरे को बताना पड़ेगा इन दोनों में से, ये दो साइड जो है AB एंड ये व्हाट BC, इनमें से परपेंडिकुलर कौन सा है एंड बेस कौन सा है। ओके, so if C becomes the reference angle, if the theta will lie here, so what happens? Perpendicular is nothing but what is perpendicular? Side opposite to the reference angle, side opposite to the reference angle means this is the reference angle and its opposite side is this one AB। so here the what perpendicular becomes AB। now what is your base? now your base is your side adjacent to the reference angle, so this is the adjacent side BC, so BC, and the hypotenuse remains fixed। hypotenuse जो है ये हमेशा फिक्स होता है और ये hypotenuse क्या है यहाँ पे AC। okay, similarly when A become reference angle, now ये A अगर reference angle बन गया, यहाँ पे थीटा आ गया, ये हो गया तुम्हारा अभी क्या हो गया रेफरेंस एंगल। if the theta अगर थीटा तुम्हारा यहाँ पे आ गया A पे, now the reference angle is A, so which one is perpendicular? now this one, the what is perpendicular? Side opposite to the reference angle, so which side is opposite to the reference angle? BC, so here BC will be the perpendicular, and which one will be what base? base is nothing but the what adjacent means लग के जो है adjoining। okay, so BC AB will be the what base here, AB will be the base। so in here what trigonometry and hypotenuse will be here AC। okay, this is fixed। so with reference to the reference angle we will change the perpendicular and base। so in the trigonometry we get here what three things। what are the three things? perpendicular, base and hypotenuse। so by using that here what three thing perpendicular, base and hypotenuse, see here we have these three things perpendicular, base and hypotenuse। these are the three sides
of the right angle triangle. Right angle triangle. Okay. So by using these three sides of the right angle triangle, okay, we can make how many ratio? 6 ratio. Maximum 6 ratio we can form by using perpendicular base and hypotenuse. And these ratio are called as trigonometrical ratio. Which ratio? Trigonometrical ratio. Okay. Now see here, what are the trigonometrical ratio? 6 trigonometrical ratio. First one is sine, then your cos, then tan, cot, sec, and your cosec. Okay. So if I take here a right angle triangle, and if this one is your theta, and this is your right angle triangle, and here right angle is here A, B, C. So this one is your perpendicular, because the side which is opposite to the your रेफरेंस एंगल मींस दिस इज द गिवन, इसके सामने जो है ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, एंड दिस योर रिमेनिंग साइड इज बेस. और यू कैन से बेस जहां मतलब जहां पे 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल दोनों रहते हैं उसको हम बेस बोलेंगे. ठीक है ना? बेस को कैसे तुम मतलब कि पहचानोगे? जहां पे 90 डिग्री और तुम्हारा रेफरेंस एंगल रहेगा उसको तुम बोलोगे बेस. Okay, so what is your sin theta, cos theta, tan theta? So here they got 6 trigonometrical ratios: sin, cos, tan, cot, sec, and cosec. This is the your short form of your sin, sin, and your short form of cosine is cos, and tangent. The short form of your tangent is tan, and short form of your cotangent is your cot. Short form of your secant is your sec. And short form of your cosecant is your cosec. Now, how will what remember? This is your what sin theta equal to what, cos theta equal to what, tan theta equal to what, and cot theta and all that. Okay, so here we will use a one trait. Okay, what is that? Your trait. That trait is P H B H and here PB. Okay, PBP by HSB. इसका मतलब क्या है? See here. So PBP. PBP means यहाँ पे इसको हम लिख पाएंगे. See here. PBP by HHB. P for पंडित बद्री प्रसाद. P पर पंडित, B पर बद्री, अगेन P पर प्रसाद. पंडित बद्री प्रसाद. ओके, डिवाइडेड बाय हर हर बोली. हर हर बोली. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली. H for हर, अगेन H for हर, and this B for बोली. So पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली. So this P by S is nothing but sine. This P by S is nothing but sine. This B by S is nothing but what? Cos. And this P by B is equal to tan. Okay. Now how will what find out this cot, sec, and cosec? Now this tan is the what? Nothing but the reciprocal of your cot. So you got just take the reciprocal of P by B. So B by P ये क्या बन जाएगा? B by P. अब इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? यहाँ पे B by H है, H by B, और इसका क्या बन जाएगा? H by P. So you got this 6 trigonometrical ratios: sin, cos, tan, cot, sec, and cosec. So sin theta equal to what? P by H. Cos theta equal to B by H. Tan theta equal to P by P. Cot theta equal to B by P. Sec theta equal to H by P. And cosec theta equal to H by P. So see here. So by using this your 6 trigonometrical ratio, we can form some your relation. Okay. So first relation is your what? Reciprocal relation. Reciprocal relation. Okay. So now we will discuss about the reciprocal relation.
see here a reciprocal relation. Okay, so you will take here p by h into your what h by p equal to what minus 1. Yes or no? See here this p and this p get cancelled, this h get cancelled. P by h equal to p by h into h by p equal to 1. Now p by h is what? P by h here. P by h is sin theta. So sin theta into h by p is what cosec theta. Sin theta into cosec theta equals 1. So you can write now sin theta equal to what? You will take this cosec theta here. So we become 1 by cosec theta. And if the cosec theta will be here, then we can write 1 by sin theta. Okay, so your what sin is the reciprocal of your cosec and cosec is the reciprocal of sin. Similarly, this is your first. Okay, second relation. You will go for b by h and your h by b equal to how much? 1. b भी get cancel, hs get cancel. यहाँ पे b भी cancel हो जाएंगे, hs cancel हो गए. b by h होता है क्या? b by h होता है क्या? cos थीटा होता है. तो b by h की जगह हम डाल सकते हैं cos थीटा. और h by b क्या है देखो यहाँ पे h by b क्या है sec है. So cos theta into sec theta equal to 1. So you can write now cos theta equal to what? 1 by sec theta. अगर sec यहाँ पे आ गया यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है इस तरह 1 से डिवाइड हो गया. cos theta equal to 1 by sec theta. Now sec theta equal to what? 1 by cos theta. Okay, this is the second. Third relation here. Here p by p into b by p equal to how much? b will get cancelled, p will get cancelled. This is also 1. So p by b होता क्या है? p by b होता क्या देखो यहाँ पे p by b है क्या? tan थीटा है और b by p क्या है? cos थीटा. So p by b के जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा. So tan थीटा into cos थीटा equal to how much? 1. So tan theta equal to we can write 1 by cos theta and cos theta equal to we can write 1 by tan theta. Yes or no? So this is all about your what reciprocal relation. ये तुम्हारा reciprocal relation बहुत ही आसान है. ये अगर तुम याद कर लिए तो हो जाएगा. ये ट्रिक याद करना PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. बहुत इजी है नहीं? अभी ऐसे भी हमारा सावन का महीना चल रहा है क्या? बम बम बोले नहीं क्या? ठीक है. ओके, ये था तुम्हारा रेसिप्रोकल रिलेशन. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कोसेंट रिलेशन. ओके, सी हियर कोसेंट रिलेशन. So what is your cosine relation? See here tan theta equal to what? Sin theta by cos theta. सर आप ऐसे कैसे बोल देंगे? भाई है इसका भी प्रूफ है. देखो sin theta by cos theta. tan theta होता क्या है? tan theta होता है p by b. तो ये भी p by b होना चाहिए, नहीं? तो sin theta क्या है? देखो p by h है. cos theta क्या है? b by h है. h क्या? कैंसिल. So it becomes p by b. Now the tan theta equal to what? Sin theta by cos theta. Second, this is the first period what cosine relation. Next, cot theta. Cot theta equal to what? Cos theta by sin theta. Cos theta होता क्या है? Cos theta होता है b by h. Sin theta होता क्या है? यहाँ पे p by h. h get cancel. b by p होता है नहीं? cot theta. So we can write tan theta equal to what? Sin theta by cos theta. Cot theta equal to cos theta by sin theta. Okay. Next we come to your what? Square relation. What is the relation? Square. Square relation. Okay. Square relation में first आएंगे sin square theta plus cos square theta equal to 1. Next, sec square theta minus tan square theta equal to 1. Now cosec square theta minus cos square theta equal to 1. Okay, sir, we want proof.
ओके देखो प्रूफ भाई यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ sin square theta plus cos square theta equal to 1 proof if you want to go for the proof no need of proof okay actually in your ICC proof is not coming फिर भी मैं यहाँ पे प्रूफ कर दे रहा हूँ sin square theta plus cos square theta equal to 1 sin theta means होता है कि p by h whole square cos theta equal to what b by h so b by h whole square so we can write this one p square by s square and this one p square by s square now here also s square in the denominator here also s square is the denominator so s square and s square so common denominator so right now I can write here s square now ऊपर में क्या बन जाएगा p square plus b square यहाँ पे क्या बन गया p square plus b square now p square plus b square equal what s square by s square get cancel क्या मिला 1 मिला क्या मिला यहाँ पे 1 why you prove sin square theta plus cos square theta equal to 1 अगर ये तुमको याद है तो ये बाकी दोनों भी तुम निकाल पाओगे यहीं से कैसे देखो बताते हैं ओके होता है कि यहाँ पे sin square theta plus cos square theta equal to 1 okay now divide both side by what cos square theta okay now I am dividing here cos square theta here also cos square theta and here also cos square theta okay so sin square by cos square sin by cos is equal to what 10 yes or no this sin square theta means nothing but sin square theta is nothing but sin theta whole square so don't be confused cos square theta means this means here what cos theta whole square okay so sin by cos equal to what see here sin by cos equal to 10 okay so 10 square theta now cos square get cancelled so what will be left here 10 square theta plus 1 so 1 by cos square equal to what sec square theta 1 by cos square theta equal to sec square theta now see here sec square theta minus tan square theta equal to 1 okay so if we what bring this tan square theta to this side okay what happens here so 1 equal to what sec square theta you will bring this tan square theta this side so this becomes minus tan square theta so sec square theta minus tan square theta equal to 1 okay next sin square theta plus cos square theta equal to 1 we know that we have already proved this one yes or no so now here we have divided cos square theta now here we will divide sin square theta divide sin square theta on both sides okay so sin square theta by sin square theta we will get here 1 cos square by sin square is what cos by sin here cos by sin equal to what cot so it becomes cot square theta because यहाँ पे भी square है cos square है sin square है so it becomes cot square theta so 1 by sin होता है क्या है 1 by sin होता है cosec cos square ये cosec square theta so 1 plus cos square theta equal to cosec square theta and he will bring this here what cos square theta to this side so 1 equal to what cosec square theta minus your cos square theta equal to 1 so these are the three square relation of their what trigonometric identities okay so here sin square theta plus cos square theta equal to 1 sec square theta minus tan square theta equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta equal to 1 okay so this is all about